Rasulullah, and Rasulullah is, which is second kufr is a person who अब सही है दूसरा वाला सही था अब सही है अच्छा second is kufr duum which is Muhammad Rasulullah a person he is the person who negates Rasulullah sallallahu alaihi wasallam or who degrades and disrespects Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is called this is the kufr duwa and kufr thani. Kufr awwal تنكر الله وتنكر وتستهزئ بالله هذا الكفر الأول والكفر الثاني أن الإنسان ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ويستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام أو ما جاء به عليه الصلاة والسلام فهذا كذلك الكفر الثاني. So the La ilaha illallah has two kufr and four shirk. So the first is, which we mentioned, that a person who, we discussed it, the person who negates Allah subhanahu wa ta'ala, who does not believe in Allah, or who disrespects Allah, who makes fun of Allah, or disrespects Allah subhanahu wa ta'ala, this is the kufr awwal. And kufr thani is a person who negates Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, does not believe on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and who disrespects Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is a kufr thani. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah is like a formula. Like you know the formula. The formula is, if you remember when I don't remember it now, but some vaguely I remember, there was this formula to find out the circumference of the circle. 2 equals to 2 pi r. 2 pi r. क्या ये क्या था? 2 into 2 pi r. ऐसे कुछ था. 2 pi r. 2 pi r. 3.14 by 2 by r. 2 pi r. 2 pi r. Yeah, this is the formula. Radius of a circle. Radius था ना? ऐसे कुछ था. 2 by 7. हाँ. 2 pi r. So this is the formula. If you put in the variables, then you will get the result. If you change the formula, can you get the results? Right. If you do a little bit change, I think it's 3.14, isn't it? Pi 3.14. Pi value is 180, which is nothing but 3.14. 3.14 is it? That's it. So if you change, this is the formula, and if you change this formula, can you get the result? Okay. Similarly, when I was doing the electrical engineering, so you have this somebody in the electrical Thevenin and Norton की equations आते हैं. So this you have to see what is the resistance, what is the circuit, and you have also got logic boards, logic gates. Sorry. If you these circuits and these the formulas of these electrical circuits, if you want to find out this is the capacitor, this is the resistance, and if you want to find out how the current will flow. So if you change the formula, then what will happen? It's a big problem. Yes. It is going to be a blast. No result. If you change that, if you put the wrong wires in the electric,
explosion. So you have to be very careful. That's why a lot of times people die. If you change the formula, there is this is a very delicate. The formula cannot be changed. And we have to understand that the formula has to be perfect. And of course, the formula is, if it has been proven, so when you put the values in, you will get the result. You put the values in, and you get the result. Uh, but if you change, if you try to, play around with the formula, then you can imagine what will happen in your house or the building. If you change the electrical formula, what will happen? Because when the transformers, the current comes to your house, and if you change the formula of the electric circuit, then you can imagine the destruction which can take place. So the formula of the universe is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. This is the formula of the universe. If you try to change the formula, then the amount of destruction which can happen is unimaginable. If you change the formula of the universe. What is the formula of the universe? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. ठीक है? A slight change in the electric circuit, you can imagine the problem. But so what will happen if the change takes place in the formula of the universe? Then imagine the destruction which will come. So this is the formula of the universe. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So everything has to be according to this formula. So what is this formula? It has two kufr and four shirk. So the first is La ilaha illallah, which is discussed in the Muhammadur Rasulullah. Now what are the four shirk? I'll say in Urdu also. तो ये कायनात का ये जो है, जैसे एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर पढ़ने वाले जानते हैं, ऐसे ही एक फार्मूला है. उस फार्मूले के लिहाज से आप करेंगे तो आपको क्या कहते हैं रिजल्ट्स मिलेंगे. अगर उस फार्मूले में आपने तब्दीली कर दी तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल सकते. और अगर उस फार्मूले के अंदर रद्द बदल किया तो खतरनाक मसाइल सब दो चार होंगे. इलेक्ट्रिक सर्किट्स का फार्मूला है, अगर उसके अंदर आपने रेजिस्टर और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स के अंदर गड़बड़ कर दी और फ्लो ऑफ करंट गड़बड़ कर दिया और यानी अर्थ का मसला था और पॉजिटिव करंट और उसमें क्या कहते हैं वो आपने क्या कहते हैं एक पॉजिटिव नेगेटिव अर्थ के अंदर गड़बड़ कर दी तो क्या असर होगा उस घर का आपको पता ही नहीं है. इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है गलत. अभी मेरे एक दोस्त ने कहा रिश्तेदार दूर के फोर्ट में काम करता है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर काम करता है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. तो काम करते करते उस बोर्ड के ऊपर तो गलत तार को उन्होंने जोड़ दिया. 11,000 वोल्ट चल रहे थे वहाँ, ठीक है, गलत तार को उसने गलती से जोड़ दिया. तो कहने लगे एक से हम देख रहे हैं 1 सेकंड का अरसा नहीं गुजरा, हम एकदम एक झपका आया, हम जैसे आकर देखे तो सिर्फ बाल रखे हुए थे, उड़ गया सेकंड. एक साहब फोर्ड में काम कर रहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो उनका दोस्त जो है वो हज़ारों वोल्ट्स के करंट चल रहे थे, वो भी टॉप इंजीनियर वो भी. तो उन तारों के अंदर वो करते थे, खाली उसको वहाँ से कंट्रोल करना था, तो पता नहीं क्या उसने उस तार को लगा के एक जगह के ऊपर फिट किया.
फिट के करीब लेके आके एकदम टच हुआ, 1 सेकंड के लिए टच हुआ, फिर 1 सेकंड का टच हुआ तो एकदम छपाका हुआ, और जैसे लोग पलट के आए तो सिर्फ वहाँ बाल थे। यानी 1 सेकंड में पूरी बॉडी को उसने इलेक्ट्रिक ने, यानी सेकंडों के अंदर उस बेचारे को चीख मारने की फुर्सत नहीं मिली। यानी वो आदमी जाके सिर्फ चंद बाल रह गया वहाँ, पूरा जल गया। यानी इसको vaporize. Yeah, it burns you. Yeah, he didn't even get a chance to scream. It burns. Yeah, I know somebody. Like that. I know somebody, but Allah subhanahu wa ta'ala he didn't die. But all his body with big burn here, everywhere. هذا ما شاء الله. I don't know how much, I don't remember how much current was going on, but what was it? But when he came, there's nothing except some hair. No, it Detroit burned. It's burned. He burned. सब out हो गया 1 सेकंड से भी कम के अंदर। He's too much volt. उसी में भी Too much volt. 24,000 volts. I don't even know how many 25,000, 100,000 it was. This High voltage. High voltage. High tension. So It's finish. it sucks you too if you come close. It's a jadibiyah. Ajib. If you come close, it can get you. Well, it sucks. तो क्या है कि हल्की सी वोल्टेज की तब्दीली से ये असर होता है। तो कायनात का जो फार्मूला है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके अंदर हल्की सी तब्दीली आएगी तो पूरे उसका असर कायनात पे होगा। अगर इस फार्मूले के अंदर कुछ तब्दीली अगर आए तो ये है असर। कुफ्र अव्वल कुफ्र दुआ, अल्लाह को नहीं मानना, अल्लाह के रसूल को नहीं मानना। अच्छा, 4 शिर्क हैं। There are 4 shirk in this. Shirk jali, shirk khafi, shirk ikhfa, khafiyul ikhfa. 4 shirk. جلي وخفي إخفاء وخفي والإخفاء. إن شاء الله. ما شاء الله. What is shirk jali? अल्लाह ताला को अज़्रू अफ़आल के वाहिदहु ला शरीक न मानना और गैरुल्लाह को शरीक करना, शिर्क जली है। अल्लाह ताला को अज़्रू अफ़आल, शिर्क जली क्या है? अल्लाह ताला को अज़्रू अफ़आल वहदहू ला शरीक न मानना और गैरुल्लाह को शिर्क करना, गैरुल्लाह को शरीक करना, शिर्क जली है। What does it mean? Allah subhanahu wa ta'ala, not to he's doing shirk in the af'al of Allah, and he is associating partners to Allah subhanahu wa ta'ala. This is called shirk jali. अज़्रू अफ़आल किया, जो भी अल्लाह ने काम किया इसको ला शरीक न मानना, यानी जो भी हो रहा है वो सब एक कर रहा है। Which means whatever is happening in the whole universe, it is only being done by Allah. And to associate partners to Allah subhanahu wa ta'ala, this is called shirk al-jali. The second thing is shirk khafi. यानी अल्लाह की ज़ात में शरीक करना किसी को, एक अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना। अब दूसरा क्या है? अल्लाह ताला को अज़्र सिफ़ात के वाहिद ला शरीक न मानना और गैरुल्लाह को शरीक करना, शिर्क खफ़ी है। The second is
Shirk khafi means that a person, he is associating partners in the sifat of Allah. First is in the Zat of Allah, and the second thing is in the Sifat of Allah. And he's associating partners to Allah subhanahu wa ta'ala in the Sifat. This is called Shirk Khafi. Shirk Ikhfa, Allah ta'ala को अज़रो ज़ात के वहदहू ला शरीक न मानना और गैरुल्लाह को शरीक करना शिर्क इख्फा है. That a person by the Zat of Allah, by Allah Himself, a person is associating partners to Allah subhanahu wa ta'ala, and he's saying that Allah is also doing, he's also doing this called ikhfa. चारों शिरक खफील इख्फा, अल्लाह ताला को अज़ल शुहूद के यानी बातिन में वहदहू ला शरीक न मानना और गैरुल्लाह को शरीक करना शिरक खफील इख्फा है. And to understand this shuhud यानी बातिन में, which means in the whole universe what's happening, it is because of Allah subhanahu wa ta'ala. And if a person is associating partners to Allah subhanahu wa ta'ala in that, this is called shirk khafi al ikhfa. Okay, it's a little confusing sometimes in the beginning to understand the concept of this, but in a simple words, basically it's two things. Allah की ज़ात में, Allah की सिफ़ात में, क्या कहते हैं, Allah की ज़ात में और Allah की सिफ़ात में शरीक करना, ये असल, ये क्या है, ये असल कुफ्र है, असल शिर्क है. What is the actual shirk? That a person in Allah subhanahu wa ta'ala and in his qualities, he associated partners. ज़ात में अल्लाह ताला को शरीक करना, क्या मतलब, यानी बुतों की पूजा करना. What do you mean by doing shirk? Shirk jali. What is the example of that? The example of that is like the people of Makkah. What they used to do, وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. What the kuffar of Makkah, what they used to do was, when they would sit on the ship, they would say, Allah, please save us. Only you can save us. But once when they leave the ship and come on the land, they start doing shirk. What they used to do, they used to worship the idols. What was the issue of the idols? In the idols, what they used to do was, they used to say, ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. That these idols, what our aqidah is about these idols is that they will take us closer to Allah and that they are helpers to Allah subhanahu wa ta'ala. This is what they should take. The idol of water, idol of children, idol of parents, idol of, there were 360 idols who were helpers to Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah, this is called shirk jali. They're doing this أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Allah has no helpers. Allah needs helpers. So how can He is, you're saying all of this work Allah alone will do? And Allah has angels, and the angels, they are the helpers of Allah subhanahu wa ta'ala. That, you see, Allah has deputed the angels. There's no doubt. Allah has deputed the angels to do the work. But not because Allah, He Himself cannot do it. Allah has deputed the angels because He has created this dunya darul asbab. That is the reason He created the angels, and He created the jinns, and He created the humans, and He created the asbab. Allah Ta'ala ne, Allah subhanahu wa ta'ala ne, वही समझते थे कि अल्लाह ताला
को फरिश्तों की ज़रूरत है मदद के लिए, हालांकि अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ने फरिश्ते क्यों बनाए? अल्लाह ताला ने फरिश्ते इसलिए अल्लाह के हुक्म से बनाए कि दुनिया को दर असबाब से किया है, और वो फरिश्ते भी वही करते जो अल्लाह चाहता है। इस माने पे नहीं कि अल्लाह को फरिश्तों की ज़रूरत है, बल्कि इस माने भी अल्लाह असबाब की दुनिया को चलाने के लिए अनसीन असबाब फरिश्तों को भी रखा, मदद के लिए नहीं, हुक्म को पूरा करने के लिए। अल्लाह को फरिश्तों की ज़रूरत है, Allah does not need the angels. He himself is the one who does each and everything. So this is called shirk jali. Shirk jali, which means in the qualities. Sorry, in the that of Allah. दो चीज़ शिरक करते हैं, अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफत। ये ज़ात का क्या है? शिरक जली है। Just of the whole thing is a person, he is doing shirk with Allah, like the actually what they say, Allah has a son, and Allah subhanahu wa ta'ala has children, and Allah has a son. Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. Allah has no children. Allah subhanahu wa ta'ala does not begets any children. He does not give children, nor he is a son, he is a father, nothing like that. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, and nobody is comparable to him. So these are the, Allah subhanahu wa ta'ala is saying that Allah has no son. Yeah. दूसरी चीज क्या है? This is called shirk jali. Allah subhanahu wa ta'ala ke azru sifat. Now the second thing, shirk khafi, is a person is associating partners with Allah in the sifat. What does it mean in the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala? It means that, for example, a person says, who is your razak? Who is your sustainer? Who gives you food? He says, Allah. But then if he says, if I don't work, or if I don't do job, or if I don't have the money, I will die of hunger. This is called shirk in that sense. Shirk in the sifat. That a person is saying, unless until I have a degree, then I will be sustained. Unless and until I have a business, then I will be sustained. Unless and until I have these things. The person whose belief is on these things, his belief is on these things, then Allah subhanahu wa ta'ala, this is called his shirk khafi, which means this is the shirk khafi, this is doing shirk on the qualities of Allah. Person gets sick, and then he says that, oh, I am sick, unless if I do not take the medication, that there is no way I could be cured. So he has associated that the purity has to be from the, what do you call, from the medicine. What is it called? It's called shirk khafi. Acha. So the question comes, but the whole dunya is working on the asbab. So basically, we use the asbab because Allah has ordered us to do. That's the only reason. Other than that, we don't need the asbab, or we don't need the means. Because He's telling us to do, that's why we're doing it. It's not that because Allah cannot feed us unless until you do these asbab. There's nothing like that. But because He told us, that's why we are doing it. Allah is saying, Famshu fi manakibiha, okay, go and get your rest. I cannot say to Allah, I don't feel like doing it, I will not do anything, I'll go to sleep and then feed me. Allah is Qadir. He can do that. Okay? But because He told us to do, we have to do it. We cannot dictate to Allah, oh Allah, this is the way. For example, this to get more elaborate on this. For example, a person, he gets the money by effort. He goes to job and he goes to work, and then he works, and after 1 week or 2 weeks he gets his paycheck.
This is one way. Second thing is this, which means he's working to get the money. That's how he got the money. Second is this, he's doing some business, and by business he got the profit, so he got the money. Third thing is this, that somebody died, he got the money, inheritance. Number fourth thing is this, somebody, what do you call, gave him a hadiah, he got the money from that. Fifth is this, for example, he was walking on the street and then he found envelope, he opened it, there were $10,000 in it. You know? This is, he got the money. Okay? Seventh is this, he put his hand, there was nothing in the pocket, he put his hand, and there was $5,000 in the hand. Allah gave it to him in his pocket. He got the money. So the question comes, which is from Allah and which is from the makhluk? What is that? Which is from Allah and which is not from Allah? All of this money which came, they all are from Allah. Through the effort which you got the money, it came from Allah. Through the business you got the money, it came from Allah. Through the hadiah, it came from Allah. You found it, it came from Allah. You, what do you call, somebody gave you hadiah, it came from Allah. Through the inheritance, came from Allah. And you put your hand in the pocket and the money came out, this also came from Allah. ठीक है ना? ये सब के सब, उर्दू में मैं कहता हूँ कि एक इंसान जैसे रिस्क की एक मिसाल है, एक आदमी को किसी ने क्या कहते हैं मजदूरी की, उसको रोज़ी मिली, एक तो ये पैसे उसको मिले, दूसरा उसने तिजारत की, उसको पैसे मिले, तीसरे उसकी किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, मालदार था, इसको बड़ी जायदाद मिल गई, उसके मरने की वजह से पैसे मिले, चौथे हुआ ये किसी ने हदिया ला के उसको दे दिया, पैसे मिले, पाँचवा ये कि वो चल रहा था और चलते चलते जो है उसको सामने एक लिफाफा था, लिफाफा खोल उसमें $10,000 थे, उसको पैसे मिले, और एक ऐसा भी है जेब में हाथ डाला तो अंदर पैसे रखे हुए थे, वो उसको पैसे मिले, धो के जब कुर्ता पहना कुछ पैसे नहीं थे, जब हाथ डाला तो अंदर पैसे निकल गए, तकिए के नीचे देखा तो पैसे निकल गए। अब हाँ ऐसी चीज़ें होती है। तो ये सारे के सारे जो पैसे आए हैं, ये सब किसने दिए भाई? सब तरीके। All of this money which came from Allah. Even if you steal it, it's ऐसे ही आपने किसी को कत्ल करके पैसे लिया, वो भी अल्लाह की तरफ से है, वो भी अल्लाह की तरफ से, लेकिन هذا خلاف الأدب actually. وكان جاي ولكن أخذته أنت أخذه بالحرام. हराम से लो, कहीं हलाल से लो, चाहे कुछ भी हो. Why we are saying this is because for example, if you steal it, that comes under the guise of asbab. Because of asbab he got it. He did not, nobody gave it to him. Yeah. He did haram or halal. Yes. He made some means, either halal or haram, and he got the money. ठीक है ना? तो अब now all of this from 6, 7, 8, 10 ways he got the money. ये जितने आए सब के सब कहाँ से आए? अल्लाह की तरफ से. अब एक गलती करता है इंसान, गलती वो ये करता है, फैमिली वहीम 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 मौलाना की फैमिली है उधर, तो वो पहले मौलाना को बोलना है ना कॉल. क्या हाल है? नहीं मौलाना मुझे भेजा, बोला फहीम को बताओ फैमिली है उधर, एक मिनट फोन कर रहे हैं. तो मुझे भेजा इस वजह से, तू नाराज मत होना मोहिबुल्लाह, तू भी नाराज मत होना. नहीं मौलाना बोला
अच्छा, जितने पैसे आए हैं ये सारे, ये जितने रास्तों से आए, ये सब के सब कहाँ से आए? This money which we got, it came from whom? Or which, with the asbab or without the asbab? Allah. With the means or without the means? You made a lot of effort, and then you drive Uber, and you drive a taxi, or you do business, or you steal, whatever means you use. We are not going to halal haram. Yeah. I'm talking about the means. The means could be both. It could be halal also, it could be haram also. But basically, it's coming from Allah. Either you rob a bank, this also came from Allah. And then you steal from somebody, also came from Allah. You make effort, that also came from Allah. Everything came from Allah. But why we don't say that, through the stealing, actually it came from Allah subhanahu wa ta'ala, but because this is against the adab, against etiquette. This is because of your own evil deeds. قَدْرِ خَيْرِ وَشَرِّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. The whole good and bad comes from Allah. But this person who has done the evil deed, and he has made the evil deed, and from this he got the money, but eventually actually it came from Allah. Allah allowed it to happen. هذا كان في ما شاء الله كان. It is the will of Allah. Allah let it happen. This dunya is the asbab. He lets the wrong thing, if a person wants to do the wrong thing, he let the wrong thing happen. For example, if we stop it, then the wrong thing cannot happen. But because this dunya is Darul Asbab, Allah will let the wrong happen so that Allah can فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. He can see who's doing good or who's doing bad. इसलिए तो बुराई को पनपने का मौका देते हैं, क्योंकि दुनिया ऐसा बाज़ों के अंदर बुराई हो ही नहीं, कैसे होगा? इब्लीस को बनाया है इसबाब की, इसके लिए Allah created Iblis so that he can see which one of us do the good deeds, which one of us do the bad deeds. Question is, we come back to our subject. Yeah. So all these means of getting the money which came from whom? From Allah. But the problem where the human being makes mistake, he says that Allah subhanahu wa ta'ala tells him, "O human being, you cannot decide how you want your rizq. That I will decide." Some people, they say, I want to get the rizq, only by business. Or some people, they say, I want to get the rizq, I put my hand, I should get it. So Allah subhanahu wa ta'ala says, "O human being, you do what I tell you, and then after that, Allah subhanahu wa ta'ala says that I will decide how you will get your rizq." We cannot decide ourselves. Maulana Hafiz asked Majlis that I am working in the madrasa and I'm getting paid. I would like to get paid. I think I want to leave it. Tawakkul karna chahiye. Don't do. Again, at that time there was no calling. Again, he wrote a letter, "Oh Sheikh, I feel very bad taking money by teaching the madrasa. I don't want to take anything." कानपुर में थे उस वक्त, कानपुर के मदरसे में पढ़ाते थे। मौलाना रहमतुल्लाह ने लिखा कि मुझे मदरसे से पैसे मिलते, मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो मौलाना महाजिर मकी रहमतुल्लाह अपने शेख से कहा, मैं नहीं लेता हूँ, keep on taking. After some time, Maulana Thanvi rahmatullah alayh, he wrote a letter, "Hazrat, I quit taking the money from the madrasa. I resigned. I'm still teaching, but I'm not taking any money." Before he asked the Sheikh 2 times, the Sheikh told him, don't leave the job. The 3rd time is this, where he left the job. And then he informed the Sheikh. And he said that, I'm not going to take anything. So the Sheikh said, "MashaAllah, you did a good job." I'll say, थाने ने खत लिखा, मैं जॉब छोड़ना चाह रहा हूँ। नहीं। पर मैं खत लिखा, मैं पैसे पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पैसे लेना चाह रहा, नहीं मैं छोड़। कुछ ऐसे लिखा था, मैंने तो छोड़ दिया, पैसे लेना ख़त्म कर दिया। तो महाजिर मक्की ने बड़ी दुआएं दी उनको, बहुत अच्छा काम किया। फिर आपने तो मना किया था,
शुरू में आपने कहा कि भाई मत छोड़ो, और मैं कहता मैं तवक्कुल करूँगा, तो उन्होंने कहा कि भाई तवक्कुल करने वाला पूछता नहीं है। तो ये अंदर कमजोरी थी, ये अंदर कमजोरी थी। जिसको कमजोरी नहीं है तो वो पूछेगा क्यों? He said that اللي صاحب التوكل ما بيسأل أصلا. قال أنت سألت منعت المرتين، وبعدين لما تركت أنت ما شاء الله مدحتني، كيف هذا؟ ليش ما منعت أول؟ قال والله أنا أتوكل على الله عشان الله يعني يرزقني بالتوكل. قال صاحب التوكل لا يسأل. لا إله إلا الله. أنت سؤالك معناته فيك نقص، في ضعف. الشيخ told him, so I asked 2 times, I want to leave the job. How come you did not allow me? But now you are saying, that, you were happy when I left the job. How come like this? He said that if you have tawakkul, you would not have asked me. Your asking is a sign that you are weak. But now, because the iman became strong, you left it. Like sometimes people come and ask, are you doing this kind of a job? Is it halal or haram? Keep on doing it. Why they say keep on doing it? Are they condoning the haram way of business? This is why they let him continue doing this if he's doing the haram. It is because if he would, why is saying it? Because the reason is this: if he would get the loss. He will blame it on the sheikh. He might fall into faqr, fall into kufr. Yeah. Why they say that, no, if you're like this, continue, because he's still in the haram, but he said continue doing that. Because if he loses his job, or loses his business, and then the conditions comes to him, then there are 2 issues. He might blame Allah, I followed his command, what happened to me? And the second thing is this: because of the poverty, because if the yaqeen is weak, the poverty takes a person to kufr. كاد الفقر أن يعود إلى الكفر. तो क्यों मना करते हैं? क्योंकि अगर वो जॉब छोड़ दे, अगर हराम जॉब कर रहा है, छोड़ दे, और अगर उसके ऊपर हालात आए तो क्या करेगा? अल्लाह को ब्लेम करेगा कि अल्लाह ने छोड़ा, वो एक्सपेक्ट करे छोड़ते मैं बन जाऊंगा बिल गेट्स, मतलब ये इस पर सहन नहीं चल रहा है ना, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो मैं तो फौरन बिलियनर तो बनना फर्ज है ना मुझ पे, उसका जहन इस तरह चल रहा है. He is thinking as soon as I leave the haram job, I should become millionaire or billionaire على طول. That's what he's thinking. So वो समझ रहा है कि जब छोड़ते हैं, अगर अल्लाह ताला ने अल्लाह यम्तहिनुहु, Allah wants to test him, or Allah wants to remove his previous sins, which he was, by doing that thing, he was doing a sin. To clean that sins, Allah subhanahu wa ta'ala will not increase his risk. So what he will do? He will blame Allah. Allah, look, I come close to you, put me in this condition. So this is what he thinks. And then if he starts blaming Allah, there's a chance that he might lose Islam. That's why they say continue on the haram. That's the reason. So you cannot say, oh, this haram, leave it. How can you say? Fatwa is there. Don't say to somebody, oh, brother,
you're doing haram, stop doing haram. You have to give the fatwa according to the iman of the person. The fatwa will be according to the iman. One person in Dubai, he used to be an employee of a wrong institution. And the Sheikh Sayyid Ahmad Khan Sahib Rahmatullah used to tell him, "Bhai, stop doing this one, get on with the job. I'm looking. And next time also he saw him, he said the same thing. Third time we saw him, he said the same thing. Sheikh Sayyid Ahmad Khan. So they became very close with this person. So once Sheikh Sayyid Ahmad Khan Sahib became angry at him. He said that, अगर तुझे हलाल नहीं मिलेगा तो क्या तू जिंदगी भर हराम ही खाता रहेगा? He said, if you will not get the halal, the whole life you will keep on eating haram. Stop. He stopped it. Allah SWT made it easy for him. Allah opened another business for him. So depending upon the person, so you should have this much firasa to see whether he can handle this or not. Because if he cannot handle it, he will go into the kufr. Because asbab and the money and the means, they don't sustain us. asbab चीज़ें हमें कुछ खिलाती पिलाती नहीं, ये सिर्फ इत्मीनान क़ल्ब के लिए होता है, कुछ नहीं. पैसे आने से ना आपकी रोजी बढ़ती है ना घटती है. सिर्फ पैसा आने से आपके दिल को इत्मीनान होता है, कुछ नहीं होता. रोजी का कोई फर्क ही नहीं, उस पैसा आ रहा हो या मत रहो. सिर्फ आपके इत्मीनान क़ल्ब के लिए होता है. शुक्र है मेरे अकाउंट में कितना $2000 सुकून से सो रहा है. स्टिमुलस चेक आ गया. So क्या स्टिमुलस चेक आ गया ना, चले भी गया, आया चला भी गया. Means asbab is for the itminan. Oh, I have in my pocket $1,000, $2,000 I have in my pocket. People are talking about million. Why are you talking about 1,000? Million. People are jumping in. My son is speaking of billions now. Million. This is just for the itminan. It will not increase your risk. It will not increase your comfort. It will not increase your, what we call, your raha, the money. Nothing will change. This will be according to, you have to understand this. This is, money is just for the itminan qalb, for having a peace in the heart that I have this much in my account or in my pocket, that's it. For example, now let's come to the example. You were saying opposite of what's happening. Now let us look at the examples. For example, Allah subhanahu wa ta'ala has written for a person that he should eat biryani. Okay? Now he has no money. He has become a cook of a millionaire and daily he eats biryani. He himself is a poor man, but because he's a cook of a rich man, so he gets to eat that biryani on a daily basis. Or let's say he is a cook in a holiday inn or an expensive hotel. He's a chief cook. So he's eating over there because daily they're cooking this. So daily he can eat this. He is eating as a chef. Like for example, if a person, Allah has written for him that he cannot eat biryani. Okay? Now, and he's a millionaire. So Allah subhanahu wa ta'ala, what he does, Allah brings a disease on him, he cannot touch it. It's not in your qismat. You can just watch, you cannot eat. Yeah, that's right. You can just see. The owner of the Citroën, French factory, Citroën, car factory, big billion. Yeah, and all money, but he could not touch bread, put it in his mouth, could not eat. Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala, and I've seen this a lot of times, rich people, they are very careful. Please forgive me, I'm not doing this. I'm not saying anything bad about rich people. Oh, I have to be very careful. I cannot, this is too much oily. There is too much carbohydrates. There is too much. No, fiber is good. They say carbohydrates. My hibbon oil. It's too much sugar. All of this thing. Too much fat. I'll take. Once in Dubai, I used to be a partner with one of the king's, nephews. So we were once invited in the party. One of these Brunei's kings or some delegation came, I don't know. So I was also invited to sit with the kings and these sheikhs. So I was sitting with them. So the table was long table. Long, because the delegation is sitting and the sheikh is sitting on the head and the table is long. And there was no food on the table. Only water and plate. That's it. Now this is the dinner, state dinner with no food. So what happened? Sitting, what's happening? Then one man came and he had biryani in his hand. He had biryani in his hand. He came and started putting the biryani in the plate. Whoever looking at him, he was putting. The second person came, he had rice. The third, he had dal. The fourth, he had vegetables. The fifth, he had pizza. The sixth, he had lasagna. First came the Arabic dishes. I'm just giving you the names. Then came the Indian dishes. Then came the Pakistani dishes. Then came the Turkish dishes. Then came the Indonesian and Malaysian and Chinese. Every person was coming and each one had a different dish because there were so many dishes which had been cooked that you could not put them on the table. So all of these people, they were standing two rows, one row over here and one row on the back. So the Quran says, يَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ. And من كثرة النعم كل واحد عنده أكل خاص. So Quran कहता है कि Allah is saying that these Gilman will move around the Jannah with the food in their hands. There will be so many of them that you cannot put them in front of you. इतने खाने जिस गुलबान के पर ये दाल ऐसा होगा. So these people, so I was sitting on this side, so behind me was a long line, and there were like probably, I don't know, 30, 40, 50 dishes, and there were 50 people on this side and 50 on this side. These people were sitting in front of me, they were looking at them, and we were sitting on this row and we were looking at them. I mean, they would look at us. Whoever looks at them, they come and put the food. So when we were sitting over there, so I thought that this is the only food. So I started eating when I saw the line of the food. Ya Allah, I missed it. I ate only one or two types of food and my stomach was filled, that's it. But the amazing part which I saw was all of these people who were sitting, somebody was eating only 2, 3, lettuce. Somebody was eating only some fruits. Somebody was eating only few vegetables, and somebody was eating without the salt. Very few people in all of this, they ate these dishes. They were eating very little bit, simple, here and there. One scoop of vegetable, that's it, this much. Everybody was very careful. And what happened? After we finished, these cooks, they went inside. MashaAllah. They went inside, they were eating all. Delegation did not eat much. They took 2, 3 here and there. But the one who ate really good were the all cooks and all the servers. They had a nice time. Enjoying it.
So the risk which is written, Allah subhanahu wa ta'ala, I can use, you can eat it as a cook or as a server. Allah subhanahu wa ta'ala, He decides how a person, because everything is in the hands of Allah. Subhanahu. Allah ta'ala बाज़ वक़्त नेमत नहीं देते, मतलब चीज़ देके नेमत खींचते हैं. Allah subhanahu wa ta'ala can give money and not give him the tawfiq or ability to eat. Give him a house and do not give him the chance to rest in his bed. Beautiful bed. Can't sleep. Allah, he has the best $5,000 bed. Huh? भूख नहीं लग रही है, सब कुछ खा सकते हैं आप. ऊपर से होता है. इंसान गौर करे, और वो सेहत के नाम पे हो या कुछ भी हो, अल्लाह ने उस नेमत से उसको महरूम किया हुआ है. या पिया पक्की बात है, अल्लाह की तरफ से है ना, क्योंकि नेमतें ही है. अब वो चाहे भूख लगे तो खाए आदमी, भूख भी अल्लाह की तरफ से आती है, वो भी नेमत है. अल्लाह ने नहीं चाहा तो नहीं लगती है, अल्लाह ने चाहा तो लगेगी. हर चीज़ का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से. यही तो चल रही बात है कि सिफ़ात में इंसान ये करे. अब अल्लाह ने सिस्टम ऐसा कर दिया कि हम असबाब पे चलते हैं कि भाई ये नहीं ये भाई ये क्या कहते हैं, किसी को खुदा ने थकाना चाहता, भाई तू जॉब करते रहे 1 घंटा 2 घंटे. अभी मैं किसी के साथ बैठा करता हूँ, रोज़ाना 100 मील बाइसिकल चलाता हूँ. कहता है कि डेली आई ड्राइव, कौन था नबील थे, कि डेली आई ड्राइव 100 माइल्स साइकिल. हाँ साइकिल. और खुदा ने उसके मुकद्दमे लिखा है तू थकेगा इसमें, तू इसमें थक. तो नमाज में नहीं थकना चाह रहा ना, अब इधर थक सर्दी में, तो यहाँ थक. मैं तो ताकत दी थी खुदा से जुड़ने की. खुशी सुना भी रहा है. ओ यू नो 100 माइल 200 कर ले, मैं तो मेरी क्या, हमें क्या फर्क पड़ता. कह रहा, he is saying, one person, I think 2,000, I drive daily 100 miles. In his bike. His bike. 100 miles on bicycle. Old man. Yeah, I'm doing. बहुत सा कमाल था. बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला वضع عليه هذا المشقة. لا يأخذ المشقة لأجل الله، فيأخذ المشقة لأجل نفسه والناس بموت. He's doing all of this tired, he's getting tired. And he's getting tired, so he's not doing this mashaqqa for the sake of Allah, so he's doing the mashaqqa for himself, for his body, and his body is going to finish. Allah, these athletes or sportsmen, they used to do 3-4 hours gym. 4 hours. तो मशक्क़त खुदा ने लिख दी उसके ऊपर, और स्क्रू को इधर फिट कर दिया, चल करता रहे. और समझा मैं बहुत ज़बरदस्त तीर मार रहा हूँ, खुश होता. नूर आएगा तो समझ में आएगा ना अल्लाह में करते क्या है. बाज़ वक़्त इंसान जब शैतान चढ़ जाता है तो उसको गलत काम करके वो खुश हो रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बस समझदारी समझ रहा अपना. ये तो दिमाग खराब होता है ना, ऐसे ही होता है. शैतान, what it does when the nur of Allah is not there, shaitan comes in, he's doing all the. So dignity, if you get the nur of Allah, if we get the nur of Allah, Allah تشوف كل العالم كلهم مجانين. If you get the nur of Allah subhanahu wa ta'ala, I'm telling you, it will look to you the whole world is pagal, the whole world is stupid, the whole world is crazy. This is the reality. وهذا الحقيقة. आपको शायद दुनिया पागल दिखेगी. Everybody will look like it. पागल क्या कहते हैं? Dignity from the top to bottom. Everybody is doing stupid things, from the presidents to the क्या कहते हैं फर्राश, sweeper. कुल्लू मजानी. तो बड़ा पागल है, छोटा पागल है. Everybody, the big stupid, small stupid. Everybody is stupid. كل يتكلم كلام ما يدخل في العقل.
talking, talk, doesn't enter to the mind. Far from Allah. सब बेवकूफ़ उनकी एक ही चीज़ बेवकूफ़ी खुदा का नूर थोड़ा सा हासिल कर ले फिर दुनिया के तमाशे देंगे وصدقني حتى في الدين شو عندهم يعني if you don't have the nur of Allah in the deen also they will do stupid things and you can see that what they're doing दीन के अंदर भी लोग बड़ी पागल हरकतें करते देखे You have to have the nur of Allah. غير نور Allah without the nur of Allah you can just sit and watch तमाशे देखो खुदा का नूर नहीं है उल्टी सीधी हरकत दीन में भी करते हैं दुनिया में भी करते हैं दोनों चलती है अल्लाह का नूर नहीं है अपनी अकल से भाई अकल पे तो शैतान के तसल्लुत है on the aql the shaitan has controlled it so from the talk you can see stupid talks stupid thing everything looks like a tamthil देख हैरानी क्या हो रहा है दुनिया में पागलपने की बातें चल रही हैं सारी So my dear respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah, I just remembered Hassan Basri rahmatullah said this actually. He said that if the Sahaba would see you, they would think that all of you are kafir, munafiq or kafir. And if they would see you, they would think that huma majaneen. They would think that they are crazy. And in fact, they are crazy. You know what happens once there's a story, then we can start. There's one story in which there was an announcement. The king said that the announcement said if it's going to rain, anybody who would drink the water of the rain would become crazy. Nobody should drink the water. It rained. Everybody, the whole country drank the water. The only one who did not drink the water was the king and his wazir, his prime minister. Everybody drank the water. So the king said to the wazir, what's up? He said, sure, everybody drank the water. So he said, Kurum Sarmajani, everybody was crazy. So the king said to the wazir, what do you think we should do? You and me, we should drink us. Otherwise, he must be the Salman al-Majani. You become Majnun. So you also drink and I will also drink. So then you can be mingle with them. So you become crazy. You also become crazy like that. The king of Otherwise, crazy. how can you rule on the crazy? You are saying they're crazy. You cannot rule. You also become crazy, so you can rule on the crazy. So that is what is happening all over the world. The crazy is ruling on the crazy. Yeah. The one who is a ruler is a crazy, and the one who is being ruled upon also a crazy. Look at what's happening all over the world. So dig your mind of aql. ما في brain. عيني عقل كيا. To my dear respected brothers, I actually. didn't understand one thing. Why? Because you are going here, but without Yes, yes. finishing. Let me go to that topic. Yeah. What is it? What is Yeah, it? why you can Allah cannot like change or like give you more if you like. We are talking about the risk. Allah won't change it. I don't get. Oh, sure. The question. Let me phrase that topic. So there are many intricate details you have to understand. In the system of the rizq, Allah subhanahu wa ta'ala, I was saying that He gives the rizq, the different ways of giving the rizq. And then a human being does not have the authority, he should not aspire that he should get the rizq only from a certain way. Okay? Allah is the one who is going, is it clear? Allah is the one who is going to decide how you should get it. Okay. Actually, I told you the story and we got sidetracked. What happens is this: when a person, now this is how it comes from. When this person starts coming closer to Allah, now what happens? Allah subhanahu wa ta'ala, what He will do is this: He will just start taking him out of the dunya in a very subtle manner. You don't even realize it.
and you are out of the dunya slowly, 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 slowly. The worries and the efforts and the concerns and the thoughts, slowly, slowly, without you even realizing it, is what Allah does. يشيلك من الدنيا انت ما تعرف وبعد فتره تقول والله ما في وين الدنيا خلاص والله مش امورك كله وانت منقطع من الدنيا كاملا. Then what will happen? Allah, what He does is that slowly you open yourself closer to Allah. Allah subhanahu wa ta'ala slowly, so what He does is He takes him, He pulls him out of the dunya without he himself realizing it. And then Allah subhanahu wa ta'ala gives him the rizq without even worrying about it. His mind is not over there. That's why the hadith of Rasulullah says, من جعل همه هما واحدا كفاه الله هم الدنيا والآخرة ومن جعل همه هم الدنيا لن يبال الله فهي أودية الهلك. The one whose worry is only akhirah, كفاه الله هم الدنيا, Allah takes care of his dunya and akhirah. And the one whose worry is only about dunya, Allah doesn't care where he gets destroyed, in which valley. The point is how to get that thing. That you have only worry of the akhirah, that is when you get the nur of Allah. जितना खुदा का नूर आएगा उतना अल्लाह ताला आपको देते चले जाएंगे और बग़ैर उसकी फ़िक्र के, बग़ैर उसकी मेहनत के, बग़ैर उसकी सोच के खुदा आपको देगा. ये सहाबा को दिया और भी बहुत सारे अल्लामा what's his name? There was one very pious sheikh who was, I'm forgetting his name, who was at the time of Mahmud Ghaznavi. Mahmud, हाँ? बहुत बुजुर्ग थे, तफसील लिखी उन्होंने, probably Allah Alusi or it was Imam Razi, Imam Fakhruddin Razi rahmatullah. He was the time of Mahmud Ghaznavi. Mahmud Ghaznavi wanted to come to India, but he had no money. So who he got the loan from? From Fakhruddin Razi. You know, today there is government to government loans. You know that government to government, there are World Banks, and so the World Bank at that time was Imam Fakhruddin Razi. He gave it to the Mahmud Ghaznavi. Mahmud Ghaznavi tried to conquer India, he could not. So all of that money was gone. Again he went back to Imam Fakhruddin Razi. Can I get some more? Again he gave it to him. Again he tried to conquer, again he could not. Mahmud Ghaznavi many times got the loan from Imam Fakhruddin Razi. Rahmatullahi alayhi. And eventually he conquered India, but he was getting all of this financial money from where? Fakhruddin Razi Rahmatullahi alayhi. So the question comes, what happens? Sometimes you see the pious people, they are still poor and things like that. The main thing you have to understand is this: these people who are connected with Allah subhanahu wa ta'ala, they are not worried about or concerned about the money. If it is written for them, it will come to them automatically. And if it is not written for them, they don't worry about it. Allah takes care of them. But one thing is this: by coming closer to Allah, Allah increase your risk. This is 100% for sure. Allah increase your risk. A person comes closer to Allah. Because the sins, what they do is this: they deplete from your risk. The sins, गुनाह आपकी तकदीर को, आपकी तकदीर में जो पैसे उसको कम करते हैं. गुनाह जो भी गुनाह करोगे आप अपनी तकदीर से कम कर रहे हो अपने पैसों को, और नेकियों से आपकी तकदीर में रोजी बढ़ती है. जितने गुनाह करोगे उतनी आपकी रोजी कम होगी. There was one king, one man, and the whole night he was doing zina and everything. Huh?
He wanted to. He wanted to, in the night, he was doing zina and everything, and drinking wine and doing zina. The morning came, so somebody came and gave him one bag of gold coins. And the same night, there was one pious man, and he was making salat the whole night. In the morning, this happened in the time of Bani Israel. In the morning, when he left the masjid, a bull came and hit him and broke his leg. You know what happened? He, the one who was the whole night doing zina and drinking wine, he got a bag of gold coins. And the one who was worshipping the whole night, when he came out of the masjid, he got hit with a bull, and the bull broke his leg. Who was praying? Whoever was praying. And then who was doing zina and all the evil things, he got a bag of gold coins. The angel said, "Ya Allah, what is this?" It should be opposite, right? It should have been opposite. उल्टा उल्टा हुआ, यानी जो रात भर जिना करता रहा, शराब पीता रहा, उसको तो पूरा आप एक बैग गोल्ड कॉइन से दिए, और जो रात भर बेचारा नमाज पढ़ता रहा, रोता रहा अल्लाह के सामने, बाहर निकले तो टांग तोड़ी, क्या कहते हैं, बैल ने लात मार के। ये क्या कहानी अल्लाह में? अल्लाह ने कहा तकदीर देख लो दोनों की। इसकी खोल के देखे तकदीर किसकी, जो रात भर जिना करता रहा, इसकी मुकद्दर में बादशाह बनना लिखा था, गुनाहों की वजह से उसको सिर्फ एक गोल्ड कॉइन के बैग देके तनख्वाह दिया। उधर उसकी किस्मत में मौत लिखी थी अगले दिन, नेकियों की वजह से अल्लाह ने सिर्फ टांग तोड़ी, बाकी जिंदगी लंबी कर दी। I was saying that what happened. So the Indian said, "Oh Allah, what is this?" I said, "Look at the destiny." So when they opened the book of destiny, this man who had got a gold coin, it was destined for him to become a king. But because of his sins, he got one bag of gold coin. Allah, that sins stopped him from being that thing. The king? Yeah. He was supposed to become the king. Allah had written for taqdeer غير معلق. If he would have done the good deeds, he would become a king. But because he did not do it, he just got a bag of gold coins. That's it. And this person, he was supposed to die next morning. Because of his good deeds, he only got a broken leg. Allah extended his life. माफी चाहता असल में तुम्हें भी करना है। तो एक साहब ने लिखा है, अल्लाह मुझे अंग्रेजी सिखा दे। बात दरअसल ये थी, हाँ, बात दरअसल ये थी कि रोजी का जो मामला है वो तो अल्लाह ताला अपने अंदाजे से देते हैं सबको, लेकिन इंसान एक तो ये होता है, आदमी ये कहता है कि मैं अपनी मर्जी से, मुझे जेब में चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, ये उसका हक नहीं है। आप तो अल्लाह की तरफ चलते रहिए तो होगा ये कि अल्लाह ताला आपकी रोजी को बढ़ाएगा। गुनाह की वजह से रोजी कम होती है, और सबसे बड़ा गुनाह जिसकी रोजी खत्म होती है वो उजुब और खुदबीनी है। सबसे बड़ा गुनाह जिसकी वजह से रोजी के अंदर रुकावटें आती हैं वो इंसान का तकब्बुर है और उसका उजुब है, मैं पनाह खुदबीनी है। ये चीज़, इसको, ये इतनी मोटी दीवार है कि खुदा की रोजी जो समंदर की तरह इस पे आ रही होती है वो रुक जाती है। इसका उजुब इतना उसका नुकसान होता है इंसान को, उजुब और खुदबीनी का। तो इसीलिए नेक आमाल से अल्लाह ताला रोजी बढ़ाते हैं और बुरे आमाल से रोजी घटती है। जैसे इस वाक़े के अंदर इस आदमी की किस्मत में लिखा था बादशाह बनना, लेकिन जिना करता रहा, शराब पीता रहा, बुरा काम करता रहा, उसको सिर्फ एक छोटी सी थैली मिली, थोड़ी सी, जिसमें क्या कहता है, अशरफी थी।
और इसने चूँकि अमल सालेह किया तो उसकी किस्मत में मौत थी अगले दिन, अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी बढ़ा दी, सिर्फ टांग टूटी। तो इसी वजह से इंसान अमल सालेह करने से अल्लाह ताला उसकी रोज़ी को, सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान को माने है रोज़ी के हुसूल के अंदर, वो उसकी उजूब और खुदबीनी, ये चीज़ है। इसीलिए ज़िक्र क्यों करवाते हैं? इसीलिए करवाते हैं, कई बार मैंने साथियों को देखा, किसी को जिक्र, कुछ लोगों को जिक्र दिया, बड़े परेशान आए थे, लेकिन बहुत हमारे हालात ख़राब है जी, कुछ पढ़ने के लिए बताया, पढ़ना शुरू किया, उसके बाद पढ़ते पढ़ते अब उनका नामो निशान नहीं, क्योंकि अल्लाह ने रोज़ी खोल दी तो सब भूल गए। फिर से वो फ़ोन करा तो टाइम नहीं था, किसी अपॉइंटमेंट्स चल रहे हैं, वो बस इसी में दुनिया में लग गए। इसीलिए अल्लाह का ताल्लुक ज़रूरी है। जब इंसान को अल्लाह का ताल्लुक मिल जाता है तो फिर उसकी रोज़ी की फ़िक्र हट जाती है, और अल्लाह का ताल्लुक अगर नहीं होगा तो उसकी रोज़ी की फ़िक्र में लगा रहेगा। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे आपने शेख साहब ने आपसे यूँ कहा कि देखो तुम परेशान मत हो, तुम्हारा सारा जितना खर्चा सब मैं उठाऊंगा। आप उनकी मजलिस में गए, उन्होंने कान में कहा परेशान मत हो, तुम्हारे सारे खर्चे वहाँ मेरे जिम्मे हैं। उन्होंने कहा ठीक है। और थोड़ी देर बाद पूछे, अच्छा वो खाना आएगा आपके पास मजलिस में? बोले, भाई आपको भी बोला ना। अच्छा आप कपड़े भी इसमें इंक्लूड है? गाड़ी का क्या हो गया? भाई बोल दिया हर चीज़ सब करेंगे, हर 2-2 मिनट परेशान हो रहा है। ऐसी अल्लाह के साथ अल्लाह ने कह दिया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, हर चौपाए की रोज़ी अल्लाह ने कहा मेरे जिम्मे। कई लोग ये कहते हैं भाई मुझे अपनी बीवी को पालना है, बच्चे को पालना है, रिश्तेदारों को पालना, सब मेरे जिम्मे। अल्लाह का ठीक है तुम खौर हो, जिम्मे तो हमारे, तुम छीन लो हमारे पास से। सबकी रोज़ी अल्लाह कहते हैं अल्लाह के जिम्मे, तो वो काम करते रहो। हाँ, अल्लाह ताला तुम्हें जरिया बनाएंगे तुम्हारे अमाल की वजह से, वरना अल्लाह चाहे तो किसी और को जरिया बनाए, उनकी भी रोज़ी होगी, तुम्हारी भी रोज़ी होगी। तुम्हारे अमाल अच्छे होंगे तुमको जरिया बनाएंगे उनकी रोज़ी का, ये तुमको जरिया बनाएंगे उनकी रोज़ी पहुँचाने का। और अगर अमाल नहीं होगा तो किसी और को जरिया बनाएंगे, आपको नहीं बनाएंगे। इस तरह असल में सारी खानी अल्लाह की तरफ से। इसलिए मेरे भाइयों, इंसान अल्लाह की तरफ होकर चले, इन चक्करों में ना पड़े। ये बिल्कुल क्या कहते हैं, इस वक्त अहमकाना दौर चल रहा पूरी दुनिया के अंदर, सारे के सारे जैसे उसने वो पानी पी रहे हैं ना तो सारे अहमक बन गए। आज पूरी दुनिया अहमकों की राज है इस वक्त। और जितना नूर आएगा आपको नज़र आएगा, आपको हत्ता कि मैं दुनिया वालों में भी देख लिया, दीन वालों के अंदर भी, जिनके अंदर नूर नहीं है उनके अंदर भी अहमकाना हरकतें करेंगे, अहमकाना जुमले बोलेंगे और अहमकाना बयान करेंगे। एक साहब कहने लगे इतने साल मैंने तबलीग में लगा दिए लेकिन मुझे कोई मुकाम नहीं मिला, मैं मस्जिद में जाता, पता नहीं मदरसे जाता, यहाँ जब बड़ा मुकाम मिलता। ये क्या बात है भाई, ये अहमकाना जुमले आनी तो क्या है? इतने बड़े बुजुर्ग मेंबर पे लाखों लोग सुन रहे, वही बोल रहे, क्या बात है ये? खुद मैंने कानून से हमें कोई मुकाम नहीं दिया, हमारी हमें समझा नहीं, मुकाम नहीं दिया। इंसान जब खुदा को भूल जाता है सब दुनिया ही है नुक्ता नज़र। अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए, अपना नूर अता फरमाए। जी जी हाँ, और वो कैसा था, वो दूसरी इसके अंदर है, वो तफसीर है, बहुत लंबी तफसीर है, और देर हो गई। वो क्यों होता नमाज के अंदर पूरी तफसील आई है, तरीक़ा कैसे होता है, वो हालत सकर कैसे पैदा होती है नमाज के अंदर, जिक्र पैदा होती है हालत सकर। बाद आगे चल के बाज़ मरतबा तो वैसे ही पैदा हो जाती है, इंसान को होश ही नहीं रहता। बात क्या है कि भाई जी जिस पढ़ा तो अल्लाह ताला अच्छा होगा। हाँ, अब दस्तरखान में 3 प्लेट बिरयानी की तरह नहीं बोला अल्लाह ताला तुम खा जाओ। रिज़्क़ से मुराद क्या है? रिज़्क़ से मुराद ये है खाना ही नहीं, पैसा, बीवी, बच्चे, हर चीज़ जितनी है सारी रिज़्क़ में आती है।
निजाम में रहो जी 3 प्लेटें बिरयानी की खा के क्या करोगे भाई तुमने नमक ज्यादा दिया ये प्लेट से नहीं मानूंगा भाई जी बाजार जी चलो जी हाँ कर लो 10 मरतबा कुल अल्लाह कर लेंगे قل والله يا الله أسكى صواب الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه سيدنا حسن رضي الله عنه سيدنا حسين رضي الله تعالى عنه وزاد بن قادر الجيلاني رحمة الله عليه وغير الشيخ رحمة الله عليه الدين بن عربي رحمة الله عليه وإلياس ويوسف سيد حسن يا الله وجد لي سياسة أنا ما سبب لا ذاك يا الله إنسان بس كسر مطافي أستغفر الله أستغفر الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والحلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصم وجبريل قادم والبراق مركب والمعراج سفر وسدرة المنتهى مقام وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد
شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على قبر سيدنا محمد في القبور لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا
Allah, 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 Allah.
يا الله 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 صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه 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 سيدنا محمد وآله وسلم عز طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها صلى عليك الله صلى عليك الله يا خير الورى صلى عليك الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله 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 ماذا على من شم تربة أحمدي ألا يشم مدى الزمان غاليا ماذا على من شم تربة أحمدي ألا يشم مدى الزمان غاليا इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की मिट्टी को सूंघा उसके महंगे महंगे इत्रों को क्या सूंघना रहा जिसने नबी की कब्र की मिट्टी को सूंघा ماذا على من شم تربة أحمدي
ألا يشم مدى الزمان غواليا. The one who smelled the fragrance of the dust of Rasulullah's qabr. Now, what is the point of smelling expensive perfumes? The one who has smelled the fragrance of the dust of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ماذا على من شم تربة أحمدي ألا يشم مدى الزمان غواليا. ماذا على من شم تربة أحمدي ألا يشم مدى الزمان غواليا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. الله كنبيك جسور اشتدوها. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وداع की पहाड़ी से शुरू हुआ, तुलू हुआ. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. अब शुक्र वाजिब है. हमारे जो सीनों में तुलू हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इस पे हम सबको शुक्र वाजिब है. अल्लाह ने हमें उन लोगों में से बनाया जो नबी की मोहब्बत में तड़पते हैं. इस पर शुक्र करो कह रहा है. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت من أمر المطاع. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. مدينة سورة आपका दिल है. جئت شرفت المدينة. अल्लाह के रसूल आपने हमारे दिलों में तशरीफ लाए. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. हम आपको खुशामदीद कहते हैं या रसूल अल्लाह. आपकी मोहब्बत हमारे दिलों में आई. हम आपको खुशामदीद कहते हैं. हम चाहते हैं मोहब्बत और बढ़ती रहे, मुस्तकिल बढ़ती रहे. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت من أمر المطاع. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. ये अपने दिल की हालत बता रहा है शायद. طلع البدر علينا. दिल में ये सूरज शुरू हुआ अल्लाह के नबी की मोहब्बत का. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. الشكر واجب है. अल्लाह के नबी की मोहब्बत का शुक्र है. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا. إيه मेरे सरकार जिसको आपको अल्लाह ने नबी बना के भेजा. جئت بالأمر المطاع. جئت شرفت المدينة. आपने हमारे दिलों को मदीने से ये अपना दिल आपने इसमें इज्जत बख्शी कि आपकी मोहब्बत हमारे दिल में आई. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. مرحبا يا خير داع. مرحبا يا خير داع. ये आपके रसूल आपको मरहबा कहते हैं कि आपकी मोहब्बत हमारे दिलों में आई. مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ضاع كبير हमारी जिंदगी में एक लम्हा भी ना आया कि हम अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से वाकिफ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اجزه عنا وعن والدينا أفضل ما جزيت به نبينا محمد ورسولا عن قومه اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا واجمع بيننا وبينك ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف والوالد وجميع من اوصانا اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم برحمتك ربياني صغيرا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وعن يميني وعن يساري نورا ومن فوقي نورا اللهم اجعل في نفسي نورا واعطني نورا وعظمني نورا واجعلني نورا يا رب العالمين يا قيوم السماوات والأرض يا ملك السماوات والأرض اللهم ربنا آتنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا